ओके सो इट्स द डी डे और ये जो डेट है 8 अक्टूबर, ये मेरे दिमाग में ऑलमोस्ट 6 महीने से रेगुलरली रिंग कर रही है। 8 अक्टूबर 8 अक्टूबर 8 अक्टूबर 8 अक्टूबर। In all my run sessions, in all my swim sessions, in all my bike session, I had this date in my mind, 8th October, and today is 8th October. Today will be the day deciding everything. मैं इतना नर्वस अपनी लाइफ में बहुत कम मोमेंट्स पे हुआ हूँ. A lot has gone into this training. A lot of people have supported me, helped me. I don't want to let them down. So it's time to go. Okay, stay with me now. It was time to start the race. मेरा swim week था, so I decided to start in the end for two main reasons. एक तो crowd थोड़ा लास्ट में कम होगा और दूसरा अगर कहीं पे कोई नर्वसनेस हो गई तो लाइफ गार्ड्स एकदम से ईजिली अवेलेबल होंगे. अभी सुन के बड़ा सिली साउंड कर रहा होगा, लेकिन समुद्र के आगे खड़े होके 2 किलोमीटर की स्विम के स्टार्ट से पहले ये आइडिया बहुत ही बढ़िया लग रहा था. भाई कुछ भी कहो, लास्ट में स्टार्ट करने से मुझे फ़ायदा ही हुआ. आई हार्डली गॉट हडल्ड अप इनटू एनी क्राउडेड ग्रुप एंड आई कुड सी ऑल द लाइफ गार्ड्स फ्री. दैट गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड अ फीलिंग दैट आई एम वेरी वेरी सेफ. बाहर आते ही मेरा कॉन्फिडेंस चरम सीमा पे था. आई हैड जस्ट ओवरकम द बिगेस्ट फियर ऑफ माई लाइफ. मैंने बोला गाइज मेरा मेडल तो दे दो, तो उन्होंने बोला वत्स अभी 90 किलोमीटर साइकिल और 21 किलोमीटर का रन बाकी है. तभी मुझे रियलाइज हुआ कि ये स्विम तो एक्चुअली इजी पार्ट था. तो मैं राजा बेटा बन के अपनी साइकिल पे पहुंचा और स्टार्ट करी ये लंबी राइड. In this horrible heat and elevation, this ride can be the most challenging thing you do in that entire day. So there are two major elevations on this route, and with back and forth makes it 4 in one lap. So total of 3 laps. So about 12 such opportunities where you need to make an extra effort in this 90-kilometer ride. Trust me, you could plan everything right, but it's always your luck that decides the outcome in such races, as many unplanned things can happen. I took a total of 3 hours, 53 minutes, 51 seconds to complete this 90 kilometer. Now that's a speed of only 23 km per hour. मेरा स्विम हुआ था 53 minutes 40 seconds में, तो अब टोटल हो गया था 4 hours 47 minutes 37 seconds and plus 20 minutes of my total transition. That makes it 5 hours 7 minutes already gone. Cutoff time 8:30 है, so I knew that I have roughly about 3 hours at this point in my mind. I am drained, exhausted, dehydrated, burnt, whatnot, and have half a marathon left to go. 29 and I found myself good. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, and you will do this greatly. And I was to give our hands to leave you. While 3 hours sounds completely normal for a half marathon, it did not come across like that on this particular day. I had to walk a lot of distance. All the way I kept on telling myself that I cannot let it go. So much has gone into this and I have to make this work. I just kept on pushing myself with all I had left in me. Well, finally, just 30 minutes before the cutoff time, I ran the red carpet. The carpet that almost seemed impossible a few months back. तो मैं सबसे पहले गया अपने फ़ोन के पास to call that special person who has been waiting for this call since long.